Yes, good morning, friends. And we start with the lecture. Yeah, let me open the chapter. One second. So, I think so. We have not done this one. इसका revision हमें नहीं किया है. Yes, we have to start from here. From the pillar of better brain. So here we can see there are the different pillar for the brain functioning, or we can say about the better functioning. We get here some of the point. That is physical and mental exercise. Second, we'll get here the brain and nutrition. Third one, tackle your mental problem. Number fourth, sleep and relaxation. Next one is mental fitness. And the last is social interaction. So we are getting the six things where our brain work better. And these are the pillar of the brain. Okay. Just okay. Just give a second, friends. Give a second.
Okay, so these are the pillar we will see. जो नंबर वन पे है the physical and mental exercise, right? कंसिडर अबाउट कि जो चीज़ें हमें अच्छी रखनी होती है हम सब फिजिकल के लिए काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, एवरीथिंग. व्हाट वी डू एग्जैक्टली फॉर आवर ब्रेन. हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे होती है एंड कब होती है एग्जैक्टली. यहाँ पे दिया हुआ वो चीज़. That is, the people who exercise regularly have lower risks of developing Alzheimer's disease. Exercise improves blood flow and memory. It also stimulates the chemical changes in the brain. Improves that improves learning, mood and thinking. हम्म, तो यहाँ पे हमने वही देखा कि किस तरीके से हमें मेंटल एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होता है. क्योंकि फर्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो अल्जाइमर डिसीज से हम दूर होंगे. सेकंड है ब्लड फ्लो और मेमोरी स्ट्रांग होती है. एंड इस ऑल्सो स्टिमुलेट जो भी केमिकल रिएक्शंस अंदर होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, उसको ये इम्प्रूव करता है. ठीक है. एंड लर्निंग मूड एंड थिंकिंग अकॉर्डिंग टू डेटॉय. नेक्स्ट है ब्रेन एंड न्यूट्रिशन. Brain and nutrition. Nutrition plays important role in brain functioning. National deficiency, sorry, nutritional deficiency may lead to some neurological problem. So, understanding the need of nutrition for brain is essential. Human brain consumes enormous amount of energy despite representing on 2% of body total mass. Human brain consumes 20% of body energy because of increased metabolic need of a human being. As evolution took place, human life becoming more complicated and demanding. As the result, need for nutrition by the brain kept on increasing to face these challenges. Now, this is the second part where brain और nutrition दोनों ही काफी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर. Just-
क्या लोग आए आज? यहाँ तनु, सुजीता, स्नेहा, हम्म, नंदनी, नंदनी वर्मा। Yes, miss. ये बेटा जरा ये पेज पढ़ लो एक बार। ऐसे सौम्या से क्या? पिलर ऑफ द बेटर ब्रेन फंक्शनिंग से रीड करो। Pillar of better brain functioning. First, physical and mental exercise. People who exercise regularly have lower risk of developing Alzheimer's disease. Exercise improves blood flow and memory. It also stimulates chemical changes in the brain that improves learning, blood, mood and thinking. Sorry. Second, brain and nutrition. Nutrition plays important role in brain functioning. Nutritional deficiency may lead to some neurological problems, so understanding the need of nutrition for brain is essential. Human brain consumes enormous amount of energy. Despite representing only 2% of body's total mass, human brain consumes 20% of body's total energy. Because of increased metabolic need of human being as evolution took place, human life became more complicated and demanding. As a result, need for nutrition by brain kept on increasing to face these challenges. हाँ मिस nutrition plays important role during developing years. So to optimize the functioning of brain, it is always essential during old age to avoid degeneration of cells. Nutrition for brain will enhance brain functioning. It will prevent as well as help in treating neurological disorders. Today, human brain is exposed to high level of stress which result in the process called as oxidation. Any food which is high in antioxidants like almond, dark chocolate, onion, berries, mangoes, seafood can help control ill effect of oxidation. Third, tackle your medical problems. Hypertension, diabetes, obesity, depression, head trauma, higher cholesterol and smoking increases the risk of dementia. You can control and reduce this risk by going for regular health checkups and taking medication whenever necessary. Fourth, sleep and relaxation. Sleep energies Sleep energizes the brain, improves mood and immune system by clearing wastage and toxins from the body. This may reduce abnormal protein of the brain called beta amyloid plaque, which is related to Alzheimer's disease. Party Practicing meditation and managing stress will help to control age-related decline in brain health. Fifth, mental fitness. Brain exercises improve your brain's functioning and promote new brain cell growth, decreasing chances of developing dementia. A person can keep his brain stimulated by solving puzzles, problems, watching stimulating movies, by thinking about different issues, or by learning something new. Sixth, social interaction. Spending time with others, participating in stimulating conversation, and staying in touch and connected with family and friends is good for your brain health. Studies have shown that those who interact more with others show less decline in their memory. After brain, let us discuss about spinal cord. वेट डियर्स फाइनल कोड मत करो, पहले इतना कर लेते हो। Okay, miss. तो यहाँ पे हमने एक देखा था फिजिकल एंड द मेंटल एक्सरसाइज को।
Now we'll see the brain and the nutrition. As I told you कि जिस तरीके से हमें हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसी तरीके से हमारे ब्रेन को भी सेम न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि वी आर डूइंग द फिजिकल वर्क और ब्रेन करता है मेंटल वर्क. So nutrition plays important role in brain functioning. Nutrition Nutritional deficiency may lead to some neurological problem. हो सकता है कोई पैरालाइज्ड हो जाए या कोई और कोई डेफिशिएंसी आ जाती है हार्ट बीट्स में, तो मतलब काफ़ी जो एक बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होती है वो मिलना ज़रूरी होता है. ब्रेन की भी ऐसी चीज़ें होती है, ब्रेन को हम क्या न्यूट्रिशन जो भी होती है वो तो मिलती है, लेकिन एक्सरसाइज करना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो यहाँ पे हम सिर्फ न्यूट्रिशन की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल हम जो भी कंज्यूम करते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ब्रेन से कनेक्टेड हो जाता है, वो भी वो चीज़ें लेता है, ठीक है. सो प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ब्रेन इज असेंशियल. जरूरी है. सो ह्यूमन ब्रेन कंज्यूम्स enormous अमाउंट. कितना लेता है वो? जस्ट 2% ऑफ द बॉडी मास. अपनी बॉडी जितनी भी है उसको 2% न्यूट्रिशन देता है. And brain consumes the 20% of body total energy because of increase the metabolism. जितना बढ़ रहा है अपने उस तरीके से न्यूट्रिशन का जो डोज है वो भी ज़्यादा हो जाता है. Because of the increase, because of increased metabolic need, need to sorry, need of human being. As evolution took place, human life बिकॉज मोर कॉम्प्लिकेट और डिमांडिंग हो गए हैं आज के लोग, ठीक है. ये है तो हमें ये चाहिए, ये है तो हमें ये चाहिए. नाउ वी आर टू मच ऑफ डिमांडिंग. एज द रिजल्ट नीड फॉर न्यूट्रिशन by the brain kept on increasing to face the challenges. Just giving you 2 minutes, अपने आप जरा पढ़ो इसको, ये पेज, by your own study. 2 minutes.
यस स्टूडेंट्स, फाइन। तो हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रेन और न्यूट्रिशन एक दूसरे को ये करते हैं। उसका सेम कंटिन्यूशन यहाँ पे है कि न्यूट्रिशन प्लेज important role during the developing years, so to optimize the function of brain. So it is also essential during the old age to avoid the degeneration of cell. Nutrition for brain, well, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है एक टाइम के बाद, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से हमें कुछ काम करना होता है, कभी कभी हम चीजें ठीक से कर नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें वो प्रॉब्लम होती है, तो व्हेन वी गो टू डॉक्टर, तो वहाँ पे डॉक्टर हमें एक ही चीज बोलता है कि आपको ये चीज की कमी है, ये डेफिशिएंसी है, ये न्यूट्रिशन कमी है, ये विटामिन की कमी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि ये सारी चीजें जो कमियां आपके अंदर हो रही है, सेम चीजें गोइंग टू बी अफेक्ट योर ब्रेन ऑल्सो, ठीक है। तो इसको ऑप्टिमाइज, इसके जो फंक्शंस होते हैं उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। तो इट इज ऑल्सो असेंशियल ड्यूरिंग द ओल्ड एज, जब हम बुढ़े होने लगते हैं तब तो नो डाउट कि हमें इनकी कितनी, इस न्यूट्रिशन की कितनी जरूरत पड़ती है। वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ द न्यूज फॉर दिस, essential for when we are getting old. So it will prevent well as in treating the neurological disorder. अगर इन केस कभी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ, तो यहाँ पे हम लाइक वी कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट एवरीथिंग, बट बिफोर दैट वो स्टेज आए, हम सब भूलते हैं, नो डाउट। एक बार ऐसा होता है कि वी आर अफेक्टिंग विद द थिंग्स, लेकिन पहले से थोड़ा सा करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, तो शायद उतनी प्रॉब्लम ना आए। टुडे ह्यूमन बॉडी इज एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। आज हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल पे हैं, ठीक है। दिखता नहीं है, बताते नहीं है, बहुत कुछ, बट एग्जैक्टली वी आर इन दैट। कोई भी चीज को लेके कभी कभी कोई फालतू चीजें होती है, मोस्ट ऑफ दी। एनी फूड विच इज हाई, नहीं ये वाला है, result in the process called the oxidation. Sorry. Any food which is high in antioxidant, जैसे आलमंड हो गया, डार्क चॉकलेट हो गए, ऑनियंस हो गई, बेरीज हो गए, मैंगोज हो गए, सी फूड हो गए, ये सब हमारे चीजों को कंट्रोल करता है, हमारी ऑक्सीडेशन को अच्छा बनाता है, ठीक है। Now we'll start with the third, that is the tackle your medical problem. So hypertension, diabetes, and obesity, depression, head trauma, higher cholesterol, and smoking increase the risk of dementia. Dementia is one of the disease या तो बीमारी जो हमारे जो हमको होती है। Then you can control and reduce this risk by going for regular health checkup. डॉक्टर के पास हमें टाइम टू टाइम एक रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाना चाहिए, और जिससे हम फिजिकली जाते हैं फिर एक बार
जाके हमें ये भी चेक कराना चाहिए, ठीक है। एंड टेकिंग मेडिसिन medication whenever necessary। नंबर 4 पे है स्लीप एंड रिलैक्सेशन। सबसे अच्छा हीलिंग पॉइंट ये होता है, सो और रिलैक्स करो। So sleep energizes the brain, improves mood and immune system by clearing the wastage and toxin from the body। यहाँ पे ये है कि स्लीप और रिलैक्सेशन, कोई भी ब्रेन को आराम देना है तो यू हैव टू गिव सम, जैसे से नेचुरल रिलैक्सेशन होता है कि आप कहीं से भी आते हो, 2 मिनट बैठते हो, आप फिर धीरे से लेट जाते हो। तो जैसे ही आपको लगता है कि आप धीरे धीरे आपको रिलैक्सेशन हो रहा है, आप सो रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहीं आपको बॉडी एक पॉजिटिव ऑरा जैसा देना चालू कर देती है, कि एक बार सोने से कम से कम आपके आधे से ज्यादा जो चीजें होती है वो रिलैक्स हो जाती है। मतलब एक सोचने के लिए टाइम एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो क्लियर करता है वेस्टेज को while you are sleeping, ठीक है। They may reduce abnormal protein of the brain that is called the beta amyloid plaques, which is related to the Alzheimer disease, जो भूलने की बीमारी होती है, ये उसको ट्रीट करने में काम आता है। ओके, देन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, इसी मेडिटेशन, योगा, ये सब मैनेज करता है स्ट्रेस को कम करने में। देन कंट्रोल द एज रिलेटेड डिक्लाइन इन ब्रेन हेल्थ। आपको ऐसा लगता है आप धीरे धीरे बुढ़े हो रहे हो और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमें चीजें याद नहीं हो रही होता है, बट व्हेन वी आर टेकिंग अ प्रॉपर डाइट डेफिनेटली ये चीजें नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका मेंटल प्रोसेस। ब्रेन एक्सरसाइज improve your brain functioning। हम्म, यहाँ पे हम देखेंगे तो ब्रेन एक्सरसाइज क्या करता है, इम्प्रूव करता है अपना जब ब्रेन फंक्शन होता है। तो ये ब्रेन एक्सरसाइज बहुत हेल्प करता है फॉर द बॉडी एंड ब्रेन इटसेल्फ, ठीक है। एंड प्रमोट द न्यू ब्रेन सेल, और उसी टाइम पे एक न्यू ब्रेन सेल बढ़ती है, दैट इज उसका काम ये है कि डिक्रीजिंग द चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिमेंटिया। नेक्स्ट है पर्सन अपना ब्रेन हमेशा एक प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट करे बाय सॉल्विंग पजल। So a person keeps his brain stimulated by solving puzzle problems, watching stimulating movies, by thinking about the different issues। जब कभी में ज़्यादा टेंशन होता है तो हम ये जगहों पे हम जाते हैं, जैसे मूवी देखने के लिए जाते हैं कुछ भी,
तो कम से कम वहाँ पे अपना होता है, अगर नहीं जा सकते तो घर में आपके पास होता है पजल्स, आप उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, जैसे घर में बैठ के आप टीवी देख सकते हो, मूवी देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है। ठीक है। सोशल इंटरेक्शन, spending time with others, participant in stimulating conversation, and staying in town and connected with family and friend is good to your brain health। तो कम कहने का मतलब है सोसाइटी में जितने भी लोग हैं तुम मिलो, बात करो उनसे खुद। हाँ, मिलो बात करो, इससे एक सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा बनता है। कहीं ना कहीं एक हेल्दी ब्रेन का पॉजिटिव पॉइंट दिखता है। स्टडीज हैव shown that those who interact more with others shows less decline in the memory। ज्यादा करके बोलना नहीं चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। नाउ ये हमने देख लिया। आफ्टर ब्रेन लेट अस डिस्कस अबाउट द स्पाइनल कोड। आरती, 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 ये किसने किया था? ओके, नंदनी, हाँ मिस। नंदनी, नंदनी कंटिन्यू करो बेटा। स्पाइनल कोड। Spinal cord. It is second important part of the central nervous system. It extends from neck to waist. Its main function is to send information from brain to body and from from to body to brain and to control reflex actions like salivation, knee jerk, blinking of eyes, etc. Reflex action is an involuntary and nearly instantaneous movement in response to stimulus. Spinal cord is connected to the periphery around 31 pair of spinal nerves. Each spinal nerve is joined to spinal cord through two roots, dorsal and ventral root. If dorsal roots are injured, we will not have sensation, and if ventral roots are injured, we will not be able to move our body and control reflex actions like also. These are quick and simple patterns of behavior without the involvement of brain. For example, knee jerk, sneezing, blinking of eyes. Miss activity B. Miss. यस, एक्टिविटी भी, एक्टिविटी भी। Think of the following actions. Which of them would be reflex action and which of them will not be reflex action? First, throwing a ball in a cricket match. Second, closing the eyes if someone brings a finger too close to them. Third, removing the hand when you accidentally touch a thorn. Fourth, immediate movement of the knee when tapped just below it. Fifth, touching a hot object and pulling back your hand. यस, गो अहेड। Glance, you must be aware of the physical and psychological changes you are experiencing at the stage of puberty. For boys, your body mass increases, facial hair, pubic hair develops, your voice becomes hoarse. In case of girls, your body structure changes, pubic hair develops, mood swing occurs, and you experience your first menarche. Menarche.
Both sexes develop curiosity and liking towards opposite sex. You can't understand these changes, and as a result, you may find it difficult to adjust with them. There is there is lack of concentration and mood swings occurring along with these changes. You are aware of these facts that these changes are taking place due to glandular system of your body. So now you may be curious to know about the glands. Glands are specialized groups of cells or organs that secrete chemical substances. The There are many glands and they all fall into two categories: endocrine and exocrine. Endocrine glands, exocrine glands directly release their secretion into organ or tissue. Exocrine glands have separate duct for its secretion. Therefore, they are also called as duct gland. For example, sweat gland, tear gland, etc. Second, endocrine gland. Endocrine gland secrete chemical substance into the bloodstream. They are called as ductless gland as they don't have separate duct. The chemical substances secreted by endocrine glands are called hormones. Hormones are like messengers that are responsible for certain behaviors or absence of reactions. ये एक बार अच्छे से कर दो। एक मिनट है। ठीक है। Okay. Name of gland. First, pituitary anterior lobe. It is also called as master gland as it helps नहीं, other. थोड़ा सा धीरे बेटा, थोड़ा थोड़ा धीरे। थोड़ा सा। Okay. First, pituitary anterior lobe. It is also called as master gland as it helps other gland to produce their secretion and secretes majority of hormone, somatotropin, growth hormone, and adrenocorticotropic hormone. Function effect: help growth of the body, helps adrenal gland, required for nourishment of fetus. Hypersecretion: first, gigantism, person becomes very huge, 8 to 9 feet tall. Second, acromegaly, the person has feature of chimpanzee, large bones, big face with huge jaw, very long hands with long fingers. Hyposecretion, dwarfism, a person is very short, 2 to 3 feet tall, but with normal intelligence. Second, posterior lobe hormone, oxytocin, creates feelings of happiness. Pitu- Pituitrin helps smooth muscle functioning of stomach. Thyrotropic follicle stimulating luteinizing hormone endorphins help thyroid helps nourishment of fetus, helps to create neurotransmitters. Second name of gland, thyroid hormone thyroxine functions maintains rate of metabolism. Hypersecretion, Graves' disease, person loses his weight, irritated mood, sleeplessness, and sweating palms. Hyposecretion, first, certinism among children, the child is mentally or physically slow. Second, my my myxedema among adults, a person becomes very huge, lacks motivation and energy, complains about weakness. Third name of gland, parathyroid hormone.
parathyroxine function, maintains calcium and phosphate balance. Hypersecretion, person feels nauseated, vomiting, sensation, feels sleepy and relaxed. Hyposecretion, person lacks motivation, energy, weakness, and muscle cramps, spasms. Name of gland fourth, adrenal cortex. Cortisone maintains level of water, sugar, and sodium. Increase in sexual drive. Females start looking like males. Heavy bones, mustache, hoarse voice. Hyposecretion, very lazy, lacks sexual drive and hunger, weight loss. Medulla, adrenaline, fear, noradrenaline, anger. Plays important role in emotional excitements. Increases in heartbeat, hypersecretion, increases in heartbeat, blood pressure, and breathing rate. Name of gland, fifth, gonads, testes in male, androgen and testosterone, secondary sex characteristics in males, voice becomes hoarse, they get mustache and beards, hypersecretion, development of bones and muscles, tendency towards sexual behavior, very energetic and aggressive behavior. Hyposecretion, males do not have desire for sex, voice remains childlike. A second, ovaries in females, estrogen and progesterone function, secondary sex characteristics in females, feminine looks develop, menarche starts. Name of gland 6, pancreas, insulin and glycogen hormone, functions maintains blood sugar level, hypersecretion reduces blood sugar, hyperglyc- hyperglycemia, person lacks energy and motivation, may faint and go to coma. Hyposecretion, person gets diabetes, quite hungry, very tired, restless, and irritated behavior, frequent and uncontrolled urination. Hyposecretion. Done, miss. हम्म, हाँ, डन डन हो गया नंदनी। हाँ मिस, हो गया। चलो देन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। तो वी वर ऑन दी स्पाइनल कोड, ठीक है। नाउ स्पाइनल कोड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे सिर्फ हम स्पाइनल कोड के ही हेल्प से सिर्फ बैठते उठते नहीं है, बट इट्स कंट्रोल ओवर ऑल द बॉडी। ये पूरे बॉडी पे कंट्रोल करता है, इवन डायरेक्टली इट कनेक्टेड टू ब्रेन। So it is second important part of the central nervous system। ये हमारा एक सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्पाइनल कोड से मैं बता रही हूँ आपको डायरेक्टली, जो आप छोटा सा देखते हो सेरिब्रम बैक साइड ऑफ द ब्रेन में, तो वो स्पाइनल कोड से ही कनेक्टेड होता है। सो इट्स एक्सटेंड फ्रॉम नेक टू वेस्ट तक रहता है। उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली देखेंगे तो नेक से वेस्ट तक होता है। एंड इट्स मेन फंक्शन is to send information from brain to body and from body to brain। Hmm.
and to control the reflect action like the salivation, knee jerk, blinking of eyes, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम ये करता है. So reflex action is an involuntary and an early instantaneous movement in response to stimulus. किसी भी चीज पे जब हम देखते हैं कि कुछ हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को हम डायरेक्टली कमांड देते हैं, जहाँ पे स्पाइनल कोड डायरेक्टली ब्रेन को कुछ बताने की कोशिश करता है कि व्हेन एंड वेयर द ब्रेन हैव टू बी रिएक्ट. Spinal cord is connected to the periphery through that is one pair of spinal nerve जिसमें बारीक बारीक त्रिवन स्पाइनल स्पाइनल नर्व है. हर एक स्पाइनल नर्व जॉइंट करता है स्पाइनल कोड को दो रूट से, एक है डोर्सल और एक है वेंट्रल रूट. सो इफ डोर्सल रूट इंजर्ड होता है, सो हमें कोई सेंसेशन नहीं मिलेगा. घाव लग जाएगा या कुछ और हो जाएगा तो हमें सेंसेशन नहीं मिलेगा. वी विल नॉट नो अबाउट कि कुछ हुआ भी है बॉडी को. We will not able to move our body and control the reflex action also. So without the involvement of brain, आप कर ही क्या सकते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नीजर, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइस, ये सब हमारे सेंसेशन है. सेंसेशन ऑर्गन की ये सारी चीजें जिससे हमें ये चीजें पता चलती है. मोस्टली अगर हम देखेंगे स्पाइनल कोड को लेके, तो स्पाइनल कोड सारे हमारी सेंसरी ऑर्गन के ही साथ मिलकर काम करता है. ठीक है. तो इसमें भी एक चीज आ गया है जो नी जर्क होता है, सॉरी स्नीजिंग होता है और ब्लिंकिंग ऑफ आइस. ये एक्टिविटी है. लाइक एन एग्जांपल, सो think of the following action, which them would be reflex action and which them will not be reflex action. The first one is here throwing a ball in a cricket match. Second है closing the eyes if someone belong finger too close. Student just give a second. आप ही examples activity to खुद पढ़ो. Telling to everyone please ये activity खुद पढ़ो. Yes, we'll go for the next page. ये हो गया है आप लोग का देख के ना, क्लोजिंग द आईज ऑफ throwing a ball cricket match में. Then closing the eyes if someone bring the finger too close to them. Then removing the hand when you accidentally touch a phone.
An immediate movement of the knee when tap just below it. Next hand, touching a hot object, touching a hot object and pulling back your hand. ठीक है? So just revise this one. थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर लो इसमें अपनी आप. ठीक है? स्पेशली रीड दिस बॉक्स. ये बॉक्स एक बार रीड करो. Next one. We're turning the next page. Um,
students will explain you this one, जो आपकी ये 2 pages है, and with this definitely I'll explain you in the next lecture. It's a little bit not feeling well, ठीक है, but definitely explain you in the next lecture. Till then, bye, take care, ठीक है.